Hello, Matujima, and you're watching Hornbill TV's Prime Time. Now headlines. Speaking at the NDTV World Summit 2024, Prime Minister Narendra Modi on Monday highlighted that in an era when the world is struggling with uncertainties, India is shining as a ray of hope. External Affairs Minister S. Shankar said on Monday that the process of disengagement with China has been completed and India and Chinese soldiers will be able to resume patrolling in the way they had been doing before. Union Home Minister Amit Shah on Monday assured that the sacrifices of police personnel who lost their lives in the line of duty will not be forgotten and further committed to eradicating terrorism and drug trafficking from the country. At least 7 people, including a doctor from Budgam and 5 non-locals, were killed, while several other people were injured in a major militant attack in Ganderpal district on Sunday evening. National Conference President Omar Abdullah on Monday, while condemning the terror attack in Gangangir, said Kashmir Pakistan nahi banega and let people of Jammu and Kashmir live with dignity and succeed. Dal, Assam has expressed objections to building of dams and accused the Assam government of trying to build 135 big dams in Arunachal Pradesh under the Hydropower Policy 2008. President of Dal, Jatiyo Yuba Baini, said Arunachal government has currently received environmental clearance to build more than 20 dams and the lower Sabansiri Dam is nearing completion, while the 3000 megawatt Dibang Dam is beginning construction. He said if 135 big dams are built, it will cause hardship to people of Assam, especially Tinsukia, Dibrugarh, Sivsagar, Dhemaji, Lakhimpur, Kolaghat, Nagaon, Morigao and Bishwanath. He also stated that to build the dams, trees worth over 1 crore each are planned to be cut down, along with lakhs hectares of forest land would be destroyed. Appealing for support, he said they do not oppose small dams. Meanwhile, Javor Dal Jayor, Dal Datia, Daipa Vahini of Assam said if construction works are not stopped, they will have to approach the court. अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पॉलिसी 2008 के तहत टोटल 135 बिग डैम बनाने के लिए अभी बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो अभी कोशिश कर रहा है। तो इसका अभी 20 से ज़्यादा जो डैम है उसको बनाने का जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है ये अभी मिल चुका है और अभी तक जो 2 डैम है, एक तो लोअर सुबनसिरी जो डैम है वो तो बन के ख़त्म होने वाला है और एक आपका दिवांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ये 3000 मेगावाट का ये अभी काम शुरू हो रहा है। इसका काम अभी शुरू हो रहा है। अगर बन के कंप्लीट हो जाता है, अगर ये 135 बिग डैम अगर बन जाता है तो हम लोगों का आसाम के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। आज आप देखिए हम लोग का जो नदी है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो अभी सूख जा रहा है। अभी मतलब ये जो अभी हम लोगों का बारिश नहीं है तो ये सीज़न में ये सूख रहा है और जब बारिश जब होगा तो ये हम लोगों का बहुत बाढ़ लेके आएगा। तो इसीलिए हम लोगों का कहना है कि ये जो डैम गवर्नमेंट ने बनाने के लिए कोशिश कर रहा है और स्पेशली सियांग में एक 11,000 मेगावाट जो हम लोग का अभी नामोनी सुबनसिरी जो है उससे मतलब 6 गुना बड़ा एक बिग डैम बनाने के लिए अभी सियांग में वो लोग कोशिश में लगा हुआ है। इसके ऊपर भी हम और जो बाकी जो डैम है वो सब बनने के लिए वो लोग अभी कोशिश में लगा हुआ है। अगर ये सब बन जाता है तो हम लोगों का असम में हम लोग का स्पेशली तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट, धेमाजी, लखीमपुर
गोलाघाट हो गया, नौगांव हो गया, मड़ीगांव हो गया, विश्वनाथ चढ़ेली हो गया, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये सब हम लोगों का बहुत इफेक्टेड होने वाला है। स्पेशली यहाँ का जो हम लोग का पानी का जो फ्लोरा एंड फोना है, जो लोग यहाँ मछली पकड़ के जो लोग अपना मतलब गुजारा करते हैं, जो लोग नदी से बाली और पलस उठाते हैं, वो लोगों के जीवन में भी वो बहुत बड़ा मतलब ये वो होगा। और ये जो बिग डैम बनाएगा उसके लिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा वो लोग अपना गस मतलब पेड़ काटने के लिए वो लोग प्लानिंग कर रहा है। और लाखों हेक्टेयर का जो ज़मीन है, जो फॉरेस्ट लैंड है, वो फॉरेस्ट लैंड को यहाँ में एकदम फिनिश कर दिया जाएगा, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। इसीलिए हम लोग डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि ये जो 135 बिग डैम बनाने का जो प्लानिंग चल रहा है, उसमें से जो छोटा छोटा डैम है वो सब बनाए तो उसमें हम लोगों का कोई ऐसा आपत्ति नहीं है। लेकिन जो इतना बड़ा बड़ा जो डैम है, जो 1000 मेगावाट, जो 500 मेगावाट, 11,000 मेगावाट, 3000 मेगावाट, 4000 मेगावाट, ये जो बड़ा बड़ा डैम है उसको बंद करने के लिए हम लोग डिमांड करते हैं। A day after at least 6 people were killed in terrorist attack in Gandebal, Jammu and Kashmir, Chief Minister Omar Abdullah decided to retain his Gandebal seat and vacated his Burgam Assembly seat. Ajaz Jan Poonch and CMLA also confirmed the decision on Monday. Abdullah won both the seats in the recently held assembly polls. The Gandebal seat is considered an Abdullah family stronghold. Omar Abdullah, who is also the NC Vice President, won Gandebal by defeating PDP Bashir Ahmad Mir by over 10,000 votes. हलबर्दारी हुई, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि जिन मुश्किलात का वो सामना पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, उस मुश्किलात के हल के लिए जो ये असेंबली आज इकट्ठी हुई है, वोट ली है, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह उनकी मुश्किलात जो हल होंगी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है, इंशाल्लाह उस पर हम खरे उतरेंगे। और आने वाली असेंबली जो हमारी पहली होगी, उसमें आप देखेंगे कि जो स्टेटहुड की बात है, 370 की बात है, 35A की बात है, उसके लिए बाज़ाब्ता जो है असेंबली के प्लेटफॉर्म से जो है बात की जाएगी। जी हाँ, उन्होंने बडगाम वाली विड्रॉ की है और उसके लिए जो अपना जब वो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगी तो वहाँ पे कैंडिडेट जो है वो बता दिए जाएंगे। स्पीकर साहब ने ऐलान किया है? जी हाँ, स्पीकर साहब ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया है। Take a short break. Keep watching. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी, यारों संग है फ्रीडम सारी। फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ, लाइफ माने एंजॉय राइड। एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, स्कूटर ले एक्टिवा, स्कूटर बोले तो एक्टिवा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच।
कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी यारों संग है फ्रीडम सारी फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ लाइफ माने एंजॉय राइड एक्टिवा 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 स्कूटर ले एक्टिवा स्कूटर बोले तो एक्टिवा। Welcome back. External Affairs Minister S. Shankar said on Monday that Indian and Chinese soldiers will be able to resume patrolling in the way they had been doing before the border face-off began in May 2020. Speaking at the NDTV World Summit, the External Affairs Minister said the process of disengagement with China has been completed. The External Affairs Minister said the LAC breakthrough is a good development that happened due to patient and preserving diplomacy. The breakthrough came ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to Russia to attend the BRICS summit tomorrow. Well, I think what Foreign Secretary has said is what I can also say, that for those who have not heard that we reached an agreement on patrolling, and with that the disengagement, we have gone back to where the situation was in 2020, and we can say with that the disengagement process with China you can say has been completed. So, so far I would say that's as much as I can share with you. I'm sure in due course iske details वगैरह निकलेंगे. No, you see, there are areas which for various reasons after 2020, because they had blocked us, so we had blocked them. So दो तरफा था, Bob. So what has happened is we have reached an understanding which will allow the patrolling. For example, you spoke about Depsang. That's not the only place. There are other places also. So I think the understanding, to my knowledge, is that we will be able to do the patrolling which we were doing in 2020. I think it's a good development. It's a positive development, and I would say it's a product of very patient and very persevering diplomacy. That at various points of time, people almost gave up. You can say, this has happened. So we have always maintained that, on the one hand, we had to obviously do the counter deployments. But side by side, we have been negotiating. We've been negotiating, in fact, since September of 2020, when I met my counterpart, Mr. Wangi, in Moscow at that time. So it has been a very patient process, maybe more complicated than it could and should have been. But whatever it is, the fact is, if we are able, as we now have, to reach an understanding regarding patrolling, regarding maintaining observing the sanctity of the LAC, then I think what it does is it creates a basis that the peace and tranquility which there should be in the border areas, which there was before 2020, hopefully we will be able to come back to that peace and tranquility. And that was our major concern, because we always said that if you disturb the peace and tranquility, how do you expect the rest of the relationship to go forward? So we'll have to see. I mean, abhi jo understanding jo thi, it was reached only today. So I think we have to see what the consequences. Yes. Rajasthan's Education and Panchayati Raj Minister Madan Dilawar was on Saturday acquitted by a court in a 6-year-old case of inciting religious hatred and disrupting communal peace.
Dilawar and DJ Honor Om Prakash were booked after a complaint was filed and Ramganj Man police station that a song played during his rally on the nomination day in November 2018 heard religious sentiments. The additional Chief Judicial Magistrate ACGM court in Ramganj Man acquitted Dilawar and the Honor accused. Dilawar was an MLA when the complaint was filed and the case was transferred to the CBCID for investigation. The police submitted a charge sheet in the ACJM court on January 24, 2022, leading to the first hearing in the case on February 15, 2022. The final hearing was held on Friday when statements from both parties were recorded and the court had reserved the verdict, which was pronounced on Saturday. मैं एक मामले में बरी नहीं हुआ, मैं तो दर्जनों मामले में बरी हुआ हूँ और आगे भी होऊंगा। और मैं इसलिए कर रहा हूँ सारी बात क्योंकि कांग्रेस राज के अधिकांश सारे मुकदमे कांग्रेस राज के हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने एक मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कराया है कि कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन जी खड़गे की हत्या मदन दिलावर ने कर दी है और आज वो पूरे देश में घूम रहे हैं, भाषण करते हैं, कांग्रेस के लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरे ऊपर ये झूठे मुकदमे होंगे और सच होंगे। और ये कांग्रेसी लोग इतने निकृष्ट हैं कि अपने परिवार के मुखिया को भी मार देते हैं। उन्होंने जयपुर के संजय सर्कल थाने में एक मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कराया है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जी की हत्या मदन दिलावर ने कर दी है और जिसमें 302 का मुकदमा मेरे ऊपर है। इससे अंदाजा लगा सकता है ये कभी भी इनके स्वार्थों के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को जबरदस्ती घसीटने के लिए अपने माँ बाप की हत्या कर सकते हैं, ये अपने नेता की हत्या कर सकते हैं, ये किसी की भी हत्या कर सकते हैं। इनको राजनीतिक लाभ चाहिए ताकि मदन दिलावर जो मेरे खिलाफ कराया उसके पीछे ये भाव था, मदन दिलावर जो कांग्रेस के कुकृत्य हैं उनके खिलाफ नहीं बोले ताकि इनको डरा दिया जाए हत्या का मामला दर्ज कर। Take another short break. Keep watching. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी, यारों संग है फ्रीडम सारी। फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ, लाइफ माने जॉय राइड। एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, स्कूटर ले एक्टिवा, स्कूटर बोले तो एक्टिवा। It only takes one prick of a needle to save lives. Get tested for HIV. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी, यारों संग है फ्रीडम सारी। फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ, लाइफ माने जॉय राइड। एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, स्कूटर ले एक्टिवा, स्कूटर बोले तो एक्टिवा। It only takes one prick of a needle to save lives. Get tested for HIV. Welcome back. Prime Minister Narendra Modi on Monday highlighted that in an era when the world is struggling with uncertainties, India is shining as a ray of hope. Speaking at the NDTV World Summit 2024, the Prime Minister said that there is a sense of positivity that we all feel in and for India. Modi said that amid all tensions, India has emerged as a ray of hope for the world and further added that India had been moving at an unprecedented scale in all sectors. The PM also emphasized that success lay in the next goal that a country needs to reach and there was a lot to be done. साथियों, हम बीते 4-5 साल के कालखंड को देखें तो ज्यादातर चर्चाओं में
एक बात कॉमन रही है और वो बात है चिंता, भविष्य को लेकर चिंता। कोरोना के समय चिंता रही कि ग्लोबल पैंडेमिक से कैसे निपटे। कोविड बढ़ा तो दुनिया भर की इकोनॉमी को लेकर चिंता होने लगी। कोरोना ने महंगाई पर चिंता बढ़ाई, बेरोजगारी पर चिंता बढ़ाई, क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंता तो थी ही, फिर जो युद्ध शुरू हुए उनकी वजह से चर्चाओं में चिंता और बढ़ गई। ग्लोबल सप्लाई चेन बिखरने की चिंता, निर्दोष लोगों की जान जाने की चिंता, ये तनाव, ये टेंशन, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब कुछ ग्लोबल समिट्स और सेमिनार्स के विषय बन गए। और आज जब चर्चा का केंद्र चिंता ही है, तब भारत में किस तरह का चिंतन हो रहा है? कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। यहां चर्चा हो रही है द इंडियन सेंचुरी, भारत की शताब्दी। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत उम्मीद की एक किरण बना है। जब दुनिया चिंता में डूबी है, तब भारत आशा का संचार कर रहा है। और ऐसा नहीं कि ग्लोबल सिचुएशन से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। चुनौतियां भारत के सामने भी है, लेकिन एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी यहां है जिसको हम सभी फील कर रहे हैं। और इसलिए द इंडियन सेंचुरी की बात हो रही है। Protesting junior doctors in West Bengal on Monday evening met Chief Minister Mamata Banerjee at the state secretariat in an effort to resolve the ongoing impasse following the rape murder of an on-duty women medic at RJK Medical College and Hospital. The doctors, however, asserted that they would continue their hunger strike demanding justice for the murdered doctors, removal of Health Secretary N.S. Nigam and enhanced security for healthcare workers, among other issues. Banerjee spoke with the protesting doctors over the phone on Saturday, urging them to end their fast, asserting that most of their demands had been met. She requested an additional 3 to 4 months to address their remaining concerns. তো সেই জায়গায় যে জিনিসগুলো অলরেডি মেনে নেওয়া হয়েছে বলে বলছেন বা বলা হচ্ছে, সেইগুলোকে প্রথমে কয়েকটা জিনিস বলি, তারপর যেগুলো মানে মানা না মানার মাঝখানে রয়েছে সেটা আমরা মনে হয় যে শেষের দিকে থাকলে ব্যাপারটা আলোচনাটা একটা স্মুথ হবে। কেননা প্রাইমারিলি কি কি জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মেনে নেওয়া বলা হচ্ছে এবং আমাদের কি জিনিস সেখানে মনে হচ্ছে সেই জায়গাটা প্রাইমারিলি রাখা, তারপর দাঁড়িয়ে কোনটা মানার প্রশ্ন নেই বা কোন জায়গায় আমরা জেদ করছি সেটা আমার মনে হয় শেষের দিকে, কেননা আগে একটা স্মুথ একটা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন বলে আমাদের মনে হচ্ছে আমাদের তরফ থেকে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনাদের যে 10 দফা দাবি, তার মধ্যে যে সেন্ট্রালাইজড রেফারেল সিস্টেম এবং যে রিয়েল টাইম বেড ভ্যাকেন্সি মনিটর ইত্যাদি নিয়ে যে পাইলট প্রজেক্ট শুরু হয়েছে, এটা আমরা মনে করি যে আমরা আন্দোলন করছি, আন্দোলনের একটা দাবি হিসেবে, জনস্বাস্থ্যের দাবি হিসেবে এই জিনিসটা গোটাটা সামনে এসেছে এবং সেটা একটাভাবে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে শুরু হয়েছে। তো এই জায়গা থেকে আমাদের মনে হচ্ছে যে আপনারা মেলেও পাঠিয়েছেন যেটা, যে এই বিষয়ে কি ইনপুট দেওয়া, যে কি কি ইনপুট আমরা দিতে পারি, সেই ইনপুটগুলো On the junior doctors meeting with CM Mamata Banerjee, West Bengal Congress President Shubhankar Sarkar expressed hope that time everything will be solved. They appealed the junior doctors and the state government to discuss and solve the problem, as no question of rigidity and flexibility is required at the time of discussion.
I am hopeful this time everything will be solved. My appeal to my junior doctors, colleagues and friends, and also the state government, please discuss and solve the problem. Because no question of rigidity, flexibility is required at the time of discussion, and anyhow. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.